Vivek Sanil and Muriel Desar. Talk 100.3. And every Monday, Talk Biz Advantage होता है brought to you by Tally Solutions. Now, आज के हमारे जो guest है, श्रीमती गिजारे, acclaimed clinical hypnotherapist है and caters to a diverse clientele both locally and internationally. And if you remember, Tally MSME Honors के दौरान पिछले साल उन्होंने कोशिश किया था, but she didn't win. But then the next year, she happened to win the honor, the Best E-Prana Icon Award for Healing with Sree in 2023. She is with us. Srimanti, good morning. Welcome to Talk 100.3. I'm so happy to be here. Good morning, Dubai. Yeah, क्या बात है, विद्या वालन लग रहा है. You know, Srimanti, when we were talking about stress, we said, oh, today is Monday. So everybody goes to work with a truckload of stress, right? So what does stress mean when you evaluate it in terms of business? How would you put this across? Because today we are talking about managing stress for business brilliance. What does this mean? You know, everybody has a different definition for it. सबका अलग-अलग स्ट्रेस. सबका अलग-अलग है. फैमिली का है, पैसे का है. हाँ नहीं, what is stress? पति का है. नहीं, what is stress? Stress is something what we are not comfortable to do. But again, stress is again something which I care about something and that's why it's giving me stress. Okay. But I'm not comfortable to do it. Right. That's in a very simple language, I would say. Yeah. What can be a stress for you might not be stress for me. So it's again a perspective. So it changes from person to person, which we already established in the beginning when we were talking. So that is stress. Now coming to business stress. You know, business stress, again, you are doing something maybe which you like probably, maybe. But again, you are not in a position or you're not in a place which is perfect for you. That's why you're stressing out. Or you maybe want to be in a different path. Right. Okay. एक केस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार ऐसा होता है कि एज अ बिजनेस ओनर आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लाइंट से पैसे आ जाएंगे, तब जाके मैं सैलरी दे पाऊंगा या दे पाऊंगी फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. अब ये तो किसी को भी स्ट्रेस में डाल दे, आप बिजनेस ओनर हो या नहीं हो. सो ये स्ट्रेस के साथ डील करना बहुत मुश्किल काम है फॉर एनी बिजनेस ओनर. So you're not talking about the economic part of it, like finance, जिसके बिना लाइफ शायद आगे ही नहीं बढ़े. ठीक है, but again I feel how you're positioned for it. Okay. माने if you think you are unable to provide, okay, at a point of time, because finally it all comes to money. See, if there's no money, of course there's stress. No honey. You will have stress, okay? But now you're saying you're not only thinking about yourself, but your organization where you're supposed to provide that. ठीक है? So obviously in a business situation, you have to work 10 steps ahead or maybe 20. ठीक है? Your pipeline should be filled up. और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, then probably to rethink your life. Now, क्योंकि sorry, if something is causing you stress day in and day out, then you have to rethink your life. इसमें कोई doubt नहीं. was it a stressful transition, or was this a transition that kind of eased the stress on you that you were, engulfed with when you were in the corporate industry? Thank you for that question, because when you make a transition, any transition brings any kind of change, brings it a different kind of environment wherein you're not comfortable maybe with the new set of things. Because पहले वाले चीज़ों से आप काफ़ी वाकिफ हो चुके हैं, ठीक है? It's now a new set. But the thing is coming to me, like I'm from a corporate background. I am from oil and gas sector. I'm from IIT Kharagpur. So when I moved a transition like this, everybody laughed. Okay, everybody, including my own close family, because they said, "What are you going to do? How are we going to introduce you to the rest of the world?" That my sister, who used to be a corporate person, she used to be a geophysicist. Now she's, something like a mind guru or mind coach. It doesn't make sense because somewhere there's a huge discrepancy. We are okay to talk about these big words, but not accept it fully in our own lives. So yes, I faced that kind of challenges. But was it smooth for me? It was absolutely smooth. Why? Because it was an inner calling that I was following. It was like the profession chose me. I didn't choose the profession. So that's how, like, if you ask me right now, a pointer for all of you, that there are 3 P's in our life: purpose,
passion and profession. मुझे लगा पैसा बोलेंगे आप. By the way, सारे अगर aligned होंगे तो पैसा भी आएगा. जबरदस्त. Okay, so your journey now, Shrimanti, involved a unique blend of science and holistic healing. So how do you strike a balance between the two when you put this into practice? So the integration of science and holistic healing forms the bedrock of my therapeutic approach. So drawing upon my scientific background, as I said, I was a geoscientist. I leveraged this analytical methodologies because, आप मेटाफिजिकल जैसे ही बोलते हैं लोगों को, दे डू नॉट गेट इट, बट आप एनालिटिकली समझाएंगे, पीपल गेट इट. सो द थिंग इज बेसिकली वी हैव अ माइंड comprises of two components, okay? So there's conscious mind, which is 10 to 12%, which makes us think, decide, analyze, rationalize. And there's a subconscious mind, which is 80 to 90%, okay? It's like a database. It has answers to all your queries. It obviously database when I say it's memory and everything, and all our autonomous functions comes from that. Wow. Like जैसे आप example, subconscious mind जैसे बोलती हूँ, people like, what do you mean? People are unable to relate. I'll give an example. जैसे आप ड्राइव कर रहे हो कभी, एंड अपने ही ख्यालों में हो, एंड यू रीच होम. हाँ, और पता भी नहीं चला यार कौन सा रास्ता लिया मैंने. अच्छा, अपने आप पहुंच गया. दिस हैपेंस विद मी कितनी बार. बिल्कुल. एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो मैं ध्यान नहीं दे रहा. तो ऐसे ही भटक के आप स्टूडियो पहुंच जाते. हाँ, मतलब अरे मैंने आज ट्रैफिक मिला नहीं मिला, कितनी गाड़ी, सिग्नल मिला नहीं मिला, ग्रीन ये वो. So you were operating out of your subconscious mind because a subconscious mind works on habits and behaviors. Nice. तो अच्छी हैबिट है मेरी, मतलब. As long as you do not go into an Crash. accident. Yes. It's fantastic. बहुत इंटरेस्टिंग श्रीमंती आपका प्रोफाइल, हिप्नोथेरेपिस्ट. तो क्या बेसिकली है आपका प्रोफाइल, इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे राइट आफ्टर. In just a bit. Talk 100.3. How does hypnotherapy really work actually? Okay. The thing is, hypnotherapy, okay, wherein the word therapy is you using something to get better at, okay? Okay. Therapy means that, right? Barabar. You are not okay with your current conditions and you want to change it. करेक्ट. Okay, so by the way, Muriel, that was psychosomatic. Psychosomatic, right? So physical. 4 बार रिपीट कीजिए. Psychosomatic. एक और बार बोलिए. Psychosomatic, एक और बार. psychosomatic. बस करो. बट एक सेकंड मैं एक्सप्लेन तो कर दूं कि है क्या वो, हाँ. ताकि आपको वो याद रहे. देखो, फिजिकल इश्यूज हमें पता है, ठीक है, फिजिकली हो रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं मेरी बीमारियां. Okay. It's on the surface. Psychological मतलब it's not on the surface, but you're feeling it in the mind. It's like a turmoil going in, like a tsunami inside. Okay. And psychosomatic is you are actually physically feeling it. Okay. But none of the medical tests show that. How is that even possible? 100% possible. Like suppose I'll give you like severe chronic back pain. I had a client like that, severe chronic back pain. So she did a lot of physiotherapies. She went to doctors, x-rays, all done. Nothing came out. So what does that mean? It's a psychosomatic. So doesn't it mean that it's in your mind? It could be that you are, कभी लगता है, right, कि I'm drowning. Now you're not really drowning. Because you're physically not there. That's a psychological issue I'm talking about. So so the thing is, हम हमेशा सबको categorize करना चाहते हैं कि ये physical है, ये ऐसा नहीं होता. There are a lot of things, and by the way, everything starts from the mind. Everything. What is a mind? Mind is a software. What is a body? Body is a hardware. But हम सारी चीजें जो feel करते हैं, महसूस करते हैं, finally it comes out on the physical level, on the body. Right? So I'll ask you an example, question actually. आप मुझे बताइए, tinnitus आपने सुना होगा, जैसे high frequency noise you're hearing. मेरे नेबर को था ये. हाँ. और वो जब बोलते थे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. करेक्ट. मतलब जब कान के नीचे पड़ती है ना, तो ऐसा सन करके जो आवाज आता है, और वो आवाज कंटिन्यू हो रहा है आपके लाइफ में बेसिकली. Can you believe that? I mean to give a perspective, understanding. Yeah. तो बट आप मुझे बताइए, क्या ये फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, साइकोसोमैटिक है? ये फिजिकल लग रहा है मुझे तो. बट वो साउंड तो है नहीं, अदरवाइज आपको भी सुनाई पड़ता अगर आपके नेबर को सुनाई पड़ रहा है तो. तो उनको सुनाई क्यों दे रहा है? Exactly. हमें क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? Exactly my point. उनकी तीसरी आँख खुल गई, is it? No. तीसरी आँख खुली, actually are very close. Something, so there is a voice which is there, and he's unable to interpret it maybe in a way. Okay. So aliens are trying to contact him. Not aliens, all. Okay. I'm just kidding. I'm just Okay. kidding. I get Shrimanti, your yeah, point. please, serious discussion. Yeah. हाँ. So what I'm trying to say, कि
ये सारी चीज़ें आप जब फील करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पुट अक्रॉस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता आपके साथ हो क्या रहा है. डॉक्टर को भी जब हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं नहीं हो पाता है. सो द थिंग इज हाउ, first of all, the whole thing comes back to the same point. How connected are you to your own body and mind? Okay. So ये क्या प्रॉब्लम था जो आपने कहा कि It's both. It's not just a physical problem. Okay. So do you think well-being has been misunderstood? When we talk about well-being, people don't understand the terminologies. I'm sure when you talk about hypnotherapy or when you talk about anything else, people just stare at you. Like कि आप क्या बात कर रहे हो? Correct. और not only that, people stare at me. People या बोलते कि वश में करना. You know, hypnotherapy. Exactly. The word is hypnotize. मतलब वशीकरण. Okay. In क्या Hindi. नागिन सीरियल बहुत देख रहे हो लगता है आप आजकल. कहाँ से शब्द निकल रहे हैं आप? नहीं, but it's true. But by the way, हाँ नहीं, मुझे भी किसी ने बोला है कि आप वशीकरण करते हो. मैंने कहा what is that? तो फिर जाके मैं अभी श्रीमंत की आंखें देख रहा हूँ मैं. कितने hypnotizing है. But the thing is, आप believe करो, my friends make fun of me when we are playing a game of, Kajal, like she's going to hypnotize me. Hello, the word therapy, it comes with two major concepts. पर्पस एंड परमिशन. हम करना क्या चाह रहे हैं, अचीवमेंट क्या है, मतलब इसमें हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं. सो ऑफ कोर्स किसी भी क्लाइंट का परमिशन लेना बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई वशीकरण ऐसे नहीं होता. बट बिना परमिशन के आप कर सकते हो? नहीं कर सकते. नहीं. सो अगर एक छोटा बच्चा भी आता है ना, उसका परमिशन लेते हैं हम कि भाई यू आर इन दिस प्रॉब्लम, यू हैविंग दिस नाइटमेयर्स, यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, और यू हैविंग दिस बुलिंग थिंग इन योर स्कूल. राइट. You are facing the problems. The first step has to be yours. Okay. Always. Like if you say, my wife snores a lot. And she should... It's the reverse actually. He snores. मुझे पता था, लेकिन मैंने उल्टा से ही बोला. लेकिन मान लीजिए तो, पर आपकी वाइफ की इच्छा है कि आप स्नोरिंग छोड़ दें, बट उनकी इच्छा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है. आपको you have to accept. So with the first is the acceptance कि मुझे ये प्रॉब्लम है. Correct. Then comes the solution ना. But आप बोल रहे हो कि snoring can be treated by hypnotherapy? 100%. क्या कह रहे हो आप? मेरे पास है snoring clients. Oh wow. Which is very nice. Now coming back, Shrimanti, to stress and in an organization perspective. Now, how do individuals identify signs of stress in their professional lives, and what are the strategies that you recommend managing your stress? If you are a business owner or you are an employee, how does it really change? Okay. So identify the signs of stress in the professional life requires heightened self-awareness. Okay. ठीक है. Individuals should be attuned to various indicators, which includes persistent fatigue. ठीक है, मतलब you're feeling constantly drained out despite rest and all of that. Right. So when you wake up in the morning, you're not looking forward to the day. That's a good sign. ठीक है. Irritability. You have unexplained mood swings. Increased sensitivity to minor issues. बहुत ही छोटा है, पर आपको बहुत irritate कर रहा है. बात का बतंगड़ बनाना. Then, one very easy way to find out that your stress is when you have disrupted sleep patterns. Correct. Difficulty falling asleep or experiencing frequent awakenings. ठीक है. Sleep is a time, because that's a time when your body goes to rest. Like correct. Body goes into a garage mode. It's hibernating. Correct. So hibernation में ही repair होता है. That's a repair mode. Right. ठीक है. So I recommend the following strategies. First is जो आपने शायद बहुत बार सुना होगा, but mindfulness practices. So incorporating meditation, deep breathing, or mindful awareness, exercising. We all know when you incorporate that in your daily routine to promote mental clarity and calmness. Regular exercise, as I said, helps a lot. And one important thing which I want to bring your attention to is setting boundaries. Very difficult. Very difficult, but extremely important. किसके साथ? हर किसी के साथ आपका बाउंड्री. मम्मा आप तो ये करते नहीं हो. ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, हर जगह आपकी बाउंड्री क्या है? आप बॉस को कैसे, how do you set your boundaries? बच्चे के साथ क्या बाउंड्री? Not just kids, with your boss, how do you Everybody, set your with your boundaries? boss? You have to define your own meet your boss. professional or personal Every boundaries. You have to avoid overcommitting. Kids के साथ भी overcommitting. ये तो है problem. Learn to say no when necessary. Seeking professional support. Okay. So if stress becomes overwhelming, don't hesitate to seek professional help. हमें एक टैबू है कि भाई हेल्प लेंगे तो हम वीक हो जाएंगे, या फिर वी फील ये सही नहीं है. Correct. Yeah. So they can provide coping strategies, and optimizing work processes
लाइक जैसे अभी when you're like suppose this interview पहले से prepare होना मतलब the thing is when we are stressed when we are not prepared enough. Okay. In one word for me, that's the thing. How prepared I am. Otherwise, I'm freaking out. I'm stressing. Correct. And embrace technological solutions like Tally Prime. By the way, they invited me, so thank you, Tally, again. So, embracing technological solutions like Tally Prime for young entrepreneurs or starting entrepreneurs who don't know how to accounting. To streamline the work processes. Okay. Utilizing the tools that enhance efficiency and can significantly reduce the workload. So it's essential to take help when needed in every sphere. सबसे पहले जो आपने कहा कि अपना खुद का रियलाइजेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. एक बार आपने रियलाइज किया, सोल्यूशन अपने आप शुरू करोगे एक्शन टुवर्ड्स इट. Talk 100.3. Yes, this is Biz Talk, Biz Advantage, brought to you by Tally Solutions, and we are discussing managing stress for business brilliance. We are in conversation with Sree Gijare, clinical hypnotherapist and lifestyle coach, Healing with Sree LLC. That's the name of a company. Now, Sree, before we could go on a break, we were talking about stress, and you did mention few points as to how you can deal with it. But when dealing with financial issues, financial stress burdens, how do you combat subjects like that? Do these points help you then, or are they different notions or do you ask your people to take a different route? See, be it financial, be it physical, psychological, psychosomatic, everything comes from your mind. Financial बार-बार बोल के हम उसको अलग करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है. Okay? अगर आपको financial stress है क्यों? Because आपने उसको ठीक से प्रिपेयर ही नहीं किया. That means again your strategies are not working maybe. So re-strategize. But work on quitting a job, Srimanti, and moving on cannot be a solution. So if somebody is... मैंने quitting वाला बात बोला ही नहीं, I'm just saying for an example. So how do you then reroute and restructure your life within that organization? If agar finances are a problem और आपको पता है कि you maybe are of age and you can't find yourself another job, put in all the worst situations possible, then how do you deal with that stress? मेरे को सिर्फ आपसे I have to ask you Muriel one question. आप खाली जॉब रिलेटेड बोल रहे हैं, हमें स्ट्रेस किसी चीज़ से भी हो सकता है, राइट? आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेस है क्योंकि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी तो क्या होगा? करेक्ट? क्या होगा करके आप स्टेप ही नहीं ले रहे हो. करेक्ट. So I am not trying to say कि I'm just giving you, if I just talk from my own journey, forget of my clients. So when I moved, I was into oil and gas, it was pretty high paying and I traveled the world. It was fantastic. जब मैंने सोचा कि मुझे ये करना है, my husband is supremely supportive, okay, like करना है तो okay, fine. But then he said, you know what? Don't expect the same kind of remuneration, okay? So I was geoscientist. पे पैकेज मत पूछना, बट काफी अच्छा था. पर द थिंग इज बात निकले तो बताइए. तो बड़ा तो और स्ट्रेस दे दो हमको. तो द थिंग इज मुझे खुद पे उस वक्त ऑब्वियसली बिलीव नहीं था, बट मुझे लगा कि नहीं, मैं इस बात पे निकल पड़ी हूँ तो मुझे चलना है, देखना है क्या है. क्योंकि एट द एंड बाद में जब व्हेन आई एम इन माय डेथ बेड कि मुझे नहीं होना चाहिए कि अफसोस की किया ही नहीं. जो मेरा पोटेंशियल था, मेरा कॉलिंग था, मेरा पर्पस था, मेरा पर्पस था. मुझे, और अगर आपको बाय द वे वी ऑल हैव वन समथिंग विद इन अस जिसके लिए हम पैदा हुए हैं. अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग ओपन्स अप. मतलब सिंस द टाइम आई हैव स्टार्टेड, व्हेन आई केम टू द प्रोफेशन, there were lots and lots of hypnotherapists. जब मैंने गूगल किया भी, कोई चांस ही नहीं है बॉस, सबने बोला कंपटीशन है, बहुत है ये. बट पता है हम हमेशा दूसरे के साथ क्यों कॉम्पीट करते हैं? खुद को बेटर बनाओ. करेक्ट. दैट वाज माय, सॉरी मैं थोड़ा ज्ञान जैसे लग रहा है, बट दिस इज माय थिंग. दिस इज व्हाट आई डिड, गोइंग इनवर्ड. माय बुक इज कॉल्ड द ओनली वे आउट इज इन. ठीक है, हमें अंदर जाना है. मुझे कम्पीट किसी और के साथ नहीं करना है, खुद के साथ करना है. एंड नाउ Vivek, if you search hypnotherapy in Dubai, I'll be in the top page without any advertisement. Really? This is very nice. SEO is like on top, yeah? Yes. Wow. Yes. So कैसे हुआ? You have to surrender. You have to trust. अगर आप इस पाथ, जो भी आपका पाथ है, जो आपको लगता है कि you are being guided, तो आप इसमें full on जाओ ना.
हम बहुत डाउट करते हैं. That means अपने आप को डाउट करते हैं. Right. तो आपको लगता है कि स्ट्रेस इन दिस रीजन इज अ लॉट मोर जनरली? I completely disagree with you. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. पता है आपको, आई कैन नॉट नेम कंपनीज, वेरी बैड. माई फर्स्ट कंपनी, आप समझते हो कपड़े नहीं छोड़ना, इट यूज टू पे मी रियली गुड. आई वॉज इन बॉम्बे. एक तो बॉम्बे की ट्रैफिक, तब मुझे लेकिन लगा ही नहीं कि कोई और लाइफ हो भी सकता है, बिकॉज दैट वाज लाइफ. और जब मैं आई यहाँ पे अबू धाबी में, सो फर्स्ट वी केम टू अबू धाबी, पूरा सिटी सो रहा है. मुझे लगा ये क्या चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, हलचल ही नहीं है यहाँ. हलचल ही नहीं है. और आप कह रहे हो कि यूएई में स्ट्रेस है. मुझे तो यूएई नहीं नहीं नहीं, आई सेड डू यू फील द पीपल इन द यूएई गो थ्रू स्ट्रेस? आई डिडंट से यूएई में स्ट्रेस. सिर्फ यूएई में के लोगों के में स्ट्रेस है? नो नहीं, नो, इट्स एवरीवेयर. हर जगह है, हर जगह पे है. मेरे आई फील यूएई इज गिविंग, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम ऑन द रेडियो, बट यूएई इज, आई थिंक, हैप्पीनेस क्वेश्चन यहाँ पे काफी ज्यादा. आपका पर्पस निकला है. मेरा तो पर्पस निकला है पे 100%. 100%. So as a business owner, कि to navigate all of this, or stress is something that you teach all your clients, right? So कितने sessions लगते हैं, and how does that work, the solution for business owners? Okay, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये काउंसलिंग सेशन नहीं होता है. ठीक है, मैं कोई बैठ के आज बोल रही हूँ कुछ चीजें, बट ऐसे ज्ञान वाला सेशन नहीं होता है. मान लीजिए मैं आपके सेशन में हूँ. हाँ, तो मान लीजिए विवेक आप आते हैं मेरे पास. काउंसलिंग में क्या होता है, आपको पता है कि मेडिटेशन अच्छा है, आपको पता है सुबह 5 बजे आप उठ के योगा करोगे, वॉक पे जाओगे, अच्छा है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है. यू डोंट वांट टू पे समवन टू कम एंड लर्न दिस, यू ऑलरेडी नो दैट. करेक्ट. सो बट द थिंग इज, हमारे जो बैरियर्स एंड बाउंड्रीज है ना, वो हमारे अंदर है. मतलब सबकॉन्शियसली आप कर नहीं पा रहे हो ये सब चीजें, क्योंकि हमें डर है कुछ चीज का. कुछ भी, द लिमिटेशंस आर विद इन यू. नाइस. ओके, बट अगर जैसे एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सो आई हैड अ क्लाइंट हु हैड ग्लूटेन एलर्जी. ओके. अब अभी आप, ये क्या फिजिकल है साइकोलॉजिकल है? ये जो तो भी फिजिकल है, रिएक्शन बॉडीली होता है. बट अगर उस प्रॉब्लम, ग्लूटेन भी प्रॉब्लम होता तो हर किसी को होता है, अगर वो ग्लूटेन जहर है. आई एम जस्ट सेइंग. But it's not. So my body is reacting. Right. And why is my body reacting? That means what? It is psychological as well. Wow. So that means lactose intolerant. जी हाँ, मेरे पास ये सारे clients हैं. जी हाँ, ठीक है. So everything starts from there, it's within you. So when you find that, now listen, आप ये खुद solve नहीं कर पाओगे. मतलब obviously you can avoid having gluten and all that. But कुछ चीज, देखिए कुछ चीजें we are okay to live with. Example, जैसे when somebody told me, I'm very scared of feathers. चलो कोई नहीं, दूर रख दो feathers को, या फिर birds. बट अगर आप बोलोगे कि मुझे birds से बहुत ornithophobic जिसको बोलते हैं, और birds हमारे चारों तरफ है, that's a problem. Then it can be limiting. जैसे आप बोलोगे कि I had clients who had aerophobia. प्लेन में चढ़ने से उनकी palpitations बढ़ जाती है. Claustrophobia. Yeah. So these are somewhere the thing is within you. So we have to go and find the missing piece which is limiting you at this point. Oh wow. ठीक है, तो अगर आप मेरे पास आते हो विवेक, so मैं आ गया आपके पास. मैं आपके सामने साक्षात बैठा हूँ. तो उसमें क्या होता है ना विवेक, so we will go deep down and understand. When I put you in a hypnotic trance, you will go down deep inside and find out, like as if वही चैप्टर खुलता है जो रिलेटेड टू दैट. यार श्रीमती कितना इंटरेस्टिंग है. आई वांट टू लिव दिस लिमिटलेस लाइफ, अब तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया. Talk 100.3. Well, we got a very lovely message from Ravi. Honestly, loving your conversation. I reached office, 20 minutes, from 20 minutes still seated in the car and listening to the show. 20 मिनट से अभी भी सुन रहे, वो पहुंच गए ऑफिस, फिर भी नहीं जाने दे रहे. श्रीमती, आपने हिप्नोटाइज कर दिया उनको. Please give contact details of Shrimanti ji and obviously send it to him on WhatsApp. Thank you, Vivek and Muriel. You both are rocking. Ravi, yes, Ravi, thank you very, very much. And very kind of you for being seated in your car for 20 minutes and listening to us. Right. So, Healing with Sree, ये इनका Instagram handle भी है. HEALING, Healing with WITH. And Sree is SREE. Instagram पे भी है, इनका website भी वही है, healingwithsree.com. Right. Now, we were also talking about hypnotherapy. और आपने कहा कि, and I asked you this question, when the person goes into that realm, right, where you are in that position to open up those doors and talk a little bit more about it. So, could you tell me exactly कि होता क्या है in hypnotherapy? Okay. So, पहले उसके लिए I need to explain to you what is mind, okay? So, the mind, as I said, initially was a software, okay? So, उसमें major components है 2. Conscious mind 10 to 12%,
subconscious mind is 80 to 90%. तो जब हम we take the world around us through our 5 sense organs, information पहले आता है हमारे पास on the conscious mind, पहले वहाँ रहता है, okay, 1.5 hours. After that is pushed down to something called the critical filter. Okay. Now this is something which we are not born with. Basically it's a layer of conditioning, our belief system, our judgments, our learnings which comes through SEER, socio-economic education and religion. क्या बात है? इससे बाय द एज ऑफ 8 years इट्स कम्प्लीटली फॉर्म्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन रिलीजन मतलब हर पर्सन का अलग होता है. तो हमारा जो ये क्रिटिकल फिल्टर है ये भी ऑब्वियसली सबका अलग है, बन गया. ये जजमेंटल लेयर बोल लो आप इसको, ठीक है. एंड देन इज द सबकॉन्शियस माइंड. तो इस क्रिटिकल फिल्टर में इंफॉर्मेशन रहता है फॉर 24 hours. उसके बाद अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो इट गोज इनसाइड एंड गोज इन द सबकॉन्शियस माइंड इन द डेटाबेस इन द पेनफुल और द प्लेजरेबल फोल्डर. अच्छा, ठीक है. जो भी हमने whatever we have experienced, the good, bad, ugly, the thappad, the kaan ke niche, whatever, these experiences, whatever we have already finished goes in the pleasurable. Whatever we haven't goes in the painful. So we are wired in a way that we reject new ideas and new experiences even though it can be beneficial to us. तो मतलब अगर जैसे अभी आप म्यूरल पूछ रहे थे कि क्या करूँ अगर आई एम सो स्ट्रेस्ड कि अगर मैं छोड़ दूंगी, तो हम न्यू चीज़ें ना ऐसे एक्सपीरियंस करने के पहले रिजेक्ट कर देते हैं. Because we've already formed an opinion about it. Exactly. Now, so the whole idea is, what I'm trying to say, right now, as many of you might be rejecting what you're hearing because you're hearing it for the first time. Correct. And that's okay. And that's where the awareness comes in. And that's where, again, Tali, thank you for inviting me. Ki, the thing is, the constant bombardment of positive suggestions makes it move from the painful to the pleasurable folder. Correct. Okay. ये हमें करते रहना पड़ेगा. जितनी बार आप सुनोगे, ये तो एडवर्टाइजमेंट का वो है. अब चीज़ जो देखते रहते हो बार बार आप उसको फाइनली खरीद ही लेते हो. सेम कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड वर्क्स दैट वे. नाउ कमिंग टू द पॉइंट व्हेन पीपल कम फॉर अ सेशन, यू नो व्हाट, इट्स अ स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन जहाँ पे आपका क्रिटिकल फिल्टर it drops down. So this is how you manage stress. This is how people when they come to my session, that's when the critical filter drops down, the subconscious mind का वही वाला फोल्डर खुलता है जिसमें आपका वो इशू है ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया. और उधर के उधर ही आप सॉल्व करते हो. अब उधर के उधर ही आपके yes, sometimes it is just bang on एक session and that's it. Wow. It has happened. Wow. I have client stories which there's some stories. By the way, my book has, थोड़ा एडवर्टाइज भी कर लूँ, उसमें है सारी स्टोरीज है, रियल स्टोरीज. सो उसमें ये है कि इट्स समटाइम्स इन वन सेशन ऑल्सो यू गो टू दैट डीप. सो बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर दैट की फॉर योर प्रॉब्लम. तो बहुत समय हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला है कि ये वाला. बट कभी कभी आई मीन आउट ऑफ दिस आई वुड से 90% आवर माइंड नोज कि व्हाट इज इट दैट्स कॉजिंग मी दिस. और आप जाके आप वही पिकअप करते हो और खोल देते हो और उसी से आप अपना खोलते हो. इसका मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स नॉट अ काउंसलिंग सेशन. आप अपना लाइफ का मिस्ट्री खुद सॉल्व करते हो. मैं सिर्फ गाइड करती हूँ. आई एम लाइक अ गाइडिंग. जीपीएस हुआ. हाँ, मैं करेक्ट, मैं जीपीएस हूँ. मैं आपको खाली गाइड करती हूँ. तो वो आवाज आपकी है, मतलब वो जो आता है गूगल पे. राइट. श्रीमंती, we will continue this conversation. Talk 100.3. 9:45 on the clock. A very, very good morning to you. Still in conversation with Srimanti Gijare. We're talking to her about all things stress. And right now, in fact, could you share a success story from your practice where a client achieved remarkable results in managing stress through holistic approaches? Okay. So, I'm grateful because I have witnessed quite a few of these transformative stories, I would say. One which stands out for me is a client of mine had cyst in her ovary. Okay, it was 7.7 centimeter cyst, and she was advised to go for surgery. And this client of mine, she is a yoga expert. She somehow believed in this. Ki, you know what? Initially, she had come to me for acne, and it worked out. And she said, "Sree, can we do this? I know it's little, because in our rational mind we believe." सिस्ट कैसे ठीक हो सकता है, सिस्ट कैसे होगा. तो उसने कहा लेकिन लेट्स ट्राई. एंड आई रिमेंबर द डेट, इट वाज 7 January 2022 एंड शी केम टू मी एंड आई सेड ओके. सो ऑनेस्टली व्हेन समथिंग लाइक दिस कम्स अप, इट डज रैटल माय लॉजिकल साइंटिफिक माइंड, क्योंकि हम भी फिर मांगने लगते कि ये पॉसिबल ही नहीं है. सो यू हैव टू कीप ऑल ऑफ इट असाइड एंड हैव टू सरेंडर. तो हमने एक सेशन किया जिसमें था ऑर्गन रीजनरेशन, वे वी वर्कड ऑन दैट ऑर्गन विच वाज हैविंग अ प्रॉब्लम. द सिस्ट हैड developed a cyst, cyst था ओवरी में. तो we started working on it and we did a mental surgery. मतलब
we worked on the cyst, trying to understand how the cyst was formed, when did it form, who all contributed, and it would be trained. So my client was a corporate lady, and she worked in a MNC, internet city में. तो जब हम इस पे काम करने लगे, by the way, it came up कि there were percentages, कौन कितना contribute किया, and it came up कि उसका बॉस का भी contribution था उसमें. तो it is not that she's saying it consciously. It just came up, okay? So, okay, after the session, we just worked on it, cleaned up, and jo bhi hai. So, and she said, Sree, don't worry, I just wanted to give it a shot. I'm not expecting, just don't stress. I said, okay, don't worry, I'm not stressing, you don't. And by the way, after the session, she said, ki, I feel like there's a tightness in my lower abdomen area. I said, surgery ki bhai. So, I was in that mode of, right. ठीक है. So 30th of January, my client said, by the way, March के पहले मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ. So I have enough time to practice what we did. Okay. So, but fate had it on 30th of January, she was called by a doctor because her doctor was leaving the country, and her case was now going to a new doctor. Right. So she said, you have to come over, and this is a new doctor. And when she went there, they were both in for a surprise. था ही नहीं, निकल गया. The cyst had dissolved to 2.1 centimeter. Surgery was no longer needed. Very nice. मतलब आपने खुद ही आपके बॉडी के थ्रू, माइंड के थ्रू आपने हील कर लिया अपने आप को. Correct. This is absolutely stunning यार, श्रीमंती. Yeah, but the thing is, ऐसा सिर्फ एक चीज पे नहीं, आप हर चीज पे कर सकते हो. Oh. So there is only one thing stopping you from living that life of your dreams, and that is you. Very interesting. Yeah. Shrimanti, I have to ask you this now. The entire industry, like the wellness industry or the medication field, is going through different phases, right? It's seeing a change with AI introduction, technology coming into the picture. How do you think your industry would be affected by it? See, the thing is, this is an alternate method of treatment, okay? So, आपको अगर लगता है कि इसके साथ मैं एक मेडिसिन में ले लूँ तो भी, it's all up to you. So it's not a replacement, and technologies help us improve, make it faster, make it better. Correct. So there's no challenge per se, as I say. It's like I feel corporates nowadays, there's more awareness. आजकल शायद हर जगह पे wellness week होता है, wellness months होता है. So ये अच्छी बात है, right? That's what I'm saying. So things have changed, come a long way. अभी इससे हम आगे ही बढ़ेंगे ना, पीछे तो नहीं जाएंगे. Right. Talk 100.3. डे ब्रेक आप सुन रहे, विवेक और म्यूरियल आपके साथ, श्रीमंती हमारे साथ. healingwithshree.com, that's the website to get to know more. We got a सवाल from Mac as well. What is the reason कि kids जो है ना इतने हाइपर है टीनेज के टाइम पे, और इवन लाइफ एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी होने के बावजूद, बेसिक रिक्वायरमेंट होने के बावजूद, लेकिन डेली रूटीन डजंट मीट नॉर्मल लाइफ उनका. इतने हाइपर क्यों है बेसिकली टीनेजर्स? सो हाइपर इज ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर विथ सो मेनी सोशल मीडियाज. इतना फास्ट पेस्ड है, नाउडेज किसी के पास टाइम नहीं कि लंबा सुन सके कोई भी चीज. 10 सेकंड 15 सेकंड बस. हाँ, बस उसमें इतनी, तो उसमें आपको सारी चीजें बोलनी है. तो अगर आपको सारी चीजें बोलनी है, आपको बड़ी फास्ट करना पड़ेगी. और बोल भी रहे सब. हाँ. So that's the age we are in right now. और आपको पता है, magic lies in slow. Right. इस पे अगर आप, मैं थोड़ा सा, I want to talk about the frequency bit, I was talking to Muriel about. Right. So the thing is, so our mind works in frequencies, and it's science, okay? Okay. So right now when we are awake and we are alert, we are in beta frequency. Beta. Okay. Beta. So it's 13 hertz above, okay? So जब हम सोने जाते हैं, जब हम थोड़ा काम, when we are meditating, when we are praying, we go into alpha frequency. Meditation के टाइम पे 7 to 13. So beta में हम बहुत me मतलब सब मैं ही हूँ, मतलब we are in the fighting mood. ठीक है. alpha में we are in a V mode, WE. So इसमें हम जैसे प्रे करते हैं, हम किसी के लिए भी प्रे कर सकते हैं. There's a lot of energies involved when we are not just thinking about myself at this point. So by the way, that is a state, this alpha state, where you learn new things. Okay. Beta state में आप repetitive कर सकते हो, जो कर रहे हो फटाफट आपको आता है, जो मतलब रोज का काम है. But वो alpha state में is a state where you learn new things.
and that can only happen when you are in a calmer state, by the way. हाँ. ठीक है? So बीटा में काम होके अल्फा स्टेट पे कैसे आना है मतलब? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि you have to, when you calm down by meditating, breath work. By the way, hypnotherapy or hypnosis is in theta state. Okay. And what is that state? That is even more lesser frequency. It's 4 to 7 hertz. और delta state is 0.4, I mean 0 भी बोल सकते हैं, to 4 hertz is the time when we go to deep sleep. By the way, deep sleep is a state where your body repairs. So when you are in that state, आपका बॉडी ऑटोमेटिक, जैसे एग्जांपल आपका सर दुख रहा है, आपने देखा होगा या आप बीमार हो, आप दवाई लेते होगे, बट व्हेन यू स्लीप यू रिकवर फास्ट. बट वो डीप स्लीप होना जरूरी है. ऑब्वियसली तब अगर आप डीप स्लीप करते हो, you are in that zone of complete delta state. बोलते. So that is the aim now. You should be, see, aim should be, मैं यही आपको बोल रही हूँ कि जो उनका क्वेश्चन था टीनेज, so to calm down and if you are working from a alpha mode is also great. जो हम अचीव कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है, बाकी चीज़ों में आपका कोई हाथ नहीं है. सो जैसे गोइंग इनटू अ थीटा स्टेट आप खुद भी नहीं कर सकते, यू नीड समबडी थर्ड पर्सन. और डेल्टा स्टेट में कोई नहीं ले जा सकता आपको, आप खुद जाते हो व्हेन यू आर स्लीपिंग. Right. Srimanti, I really want to ask you, how do you cultivate a stronger mind and body connection? And after this, you also have to answer as to, is your hypnotherapy sessions and everything you do for a limited age group only? Okay. So the thing is, mind body connection पे मैं थोड़ा बोल लेती हूँ. माइंड जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था इज अ सॉफ्टवेयर, एंड उस सॉफ्टवेयर को हम कहाँ रन कर रहे हैं? हार्डवेयर में, विच इज़ अ बॉडी. सो देर इज़ अ कनेक्शन. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि देर इज अ कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड का एक सब पार्ट होता है कॉल्ड द प्रिमिटिव माइंड. ओके, इट इज़ द वायरिंग दैट वी आर बॉर्न विद. सो वी आर बॉर्न विद द इंस्टिंक्ट टू फाइट एंड फ्लाइट. ये ऑटोमेटिक है. मतलब whenever we are exposed to any kind of threat, danger or even stress, ये automatically kicks in. And when it kicks in, we go into a fight and flight mode. ठीक है? Adrenaline and cortisol are released. These are, your autonomous nervous system has kicked in, sympathetic curve of it. मतलब adrenaline and cortisol जब release होता है, they act as a loudspeaker informing the rest of the organs to go into the fight and flight mode. जैसे देखिए, फाइट एंड फ्लाइट में जाने के लिए, आपको भागने के लिए या फिर लड़ने के लिए, योर हार्ट शुड बी पंपिंग फास्टर. ओके, सो यू हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ठीक है, यू माइट बी ब्रीदिंग फास्टर, हार्डर, हाइपर वेंटिलेटिंग, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो एड्रेनालिन कॉर्टिसोल जो मैंने बोला, ये जब होता है, देयर इज मोर शुगर इन द ब्लड, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, अदरवाइज आप भागोगे कैसे? और अगर आप भागते भी हो तो आप कुछ, you cannot run for certain time. You cannot keep on running, others you'll collapse and die. Correct. So but you need that energy for fighting and flighting. Right. So your endocrine system is impacted. By the way, the first organ which gets impacted in stress is your gastrointestinal system. सबसे पहले स्टमक पे असर पड़ता है. इसलिए पेट की गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं सबसे पहले स्ट्रेस में. And that's why you feel the burning sensation. And you feel the butterflies, nausea. It starts from here always. The reflux. And by the way, it's our sixth instinct. That's why हम इसको क्या बोलते हैं? Gut feeling. Right. Very ठीक है. And even stress has a huge impact even on our reproductive system, or it can cause you have menstrual cycles or even low sperm count. So ये तो direct connection है. But the thing is, coming to the main focus, stress में हम क्या करते हैं? Fight and flight. So you're meant to fight और फ्लाइट, रन. बट मान लो आप करते नहीं हो ये चीज़ें, शॉक में खड़े हो जाते हो. उधर शॉक में खड़े हो, या फिर आपने डिसीजन लिया, जैसे अभी वी वर टॉकिंग इन द बिगिनिंग कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, सो आई एम स्टेइंग पुट. बट बॉडी ने तो सिग्नल दे दिया है भागने के लिए, भागो या फिर लड़ो. बट सो देयर इज मोर शुगर इन योर ब्लड, पर आपने यूज नहीं किया, आपने वेस्ट कर दिया उसको. तो उसका क्या होगा? वेस्ट नहीं हुआ, बाय द वे, कुछ वेस्ट नहीं जाता है, तो आपको हो गया डायबिटीज. शाबाश. ठीक है, आपका एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स, तो क्या हुआ? यू हैव हार्ट इश्यूज. तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. और ये समझना बहुत जरूरी है. You know, Srimanti, we are running out of time, but this is it's an amazing conversation. So is this for a particular age group, or do you? इसका कोई एज ग्रुप नहीं है. My youngest client is 4 years old. My oldest was 76. Okay. Four. Wow. Again, I want to, this client of mine
इसको था कि नाइटमेयर्स आते थे. आप बोलोगे इतना इजी तो कॉमन सा प्रॉब्लम है, बट वो एक ही चीज बार बार देख रही है एज इफ शी वाज स्टक इन देयर. ओके, उसमें भी पेरेंट्स ने कहा चलो यू टॉक एंड यू सूद कि चलो तुम्हारे साथ मैं सो जाती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. सो दे ट्राइड एवरीथिंग, बट उसके बाद एक पॉइंट आया जिसमें वो मॉर्निंग में भी नेक्स्ट रूम नहीं जा पा रही थी. एंड देन शी आफ्टर अ पॉइंट केम अ टाइम जब वो बोल रही थी मुझे स्कूल भी नहीं जाना. दैट इज अ टाइम व्हेन द पेरेंट्स केम एंड आई एम ग्लैड दैट दे हैड दैट ओपन माइंडेडनेस टू कम एंड ट्रस्ट मी. सॉल्व हो गया एक ही सेशन में, एक ही. कैन यू बिलीव इट? बहुत ब्रिलियंट. बिकॉज बच्चे यार, एज आई सेड, बच्चों का जो क्रिटिकल फिल्टर है ना उतना डेवलप नहीं हुआ होता है. उनको तो उतना चाहिए भी नहीं. दे आर द मोस्ट मैलिएबल फॉर्म पॉसिबल. अगर आपको और जानना है, healingwithshree.com, दैट्स द वेबसाइट. यही है इंस्टाग्राम हैंडल. Quickly, small businesses and startups can now upgrade to Tally Prime 4.0, a complete business management solution जो ऑफर करता है intuitive dashboard, WhatsApp for business and Excel import functions. TallySolutions.com or 800-TALLY 800-82559 for Tally Prime 4.0, simply professional. And thank you, Shrimanti, for Thank you. taking time out Thank you and so coming to our much. It was a studios. pleasure to be with you guys. I enjoyed myself, so I hope the The listeners love Yeah, us. yeah. They Listeners love I ने hope message so. भेजा है, yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. With Vivek Sanil and Muriel Desar. Talk 100.3.